Good morning, everyone. I am Mrs. Priyanka Gupta, and I welcome you all back, children. And today we are going to start with chapter 7 of class 8, subject science. Chapter 7, that is conservation of plants and animals. Right? In conservation of plants and animals, the first topic, and this is the first video of the chapter, first part of the chapter. And in the first part, we are going to discuss about these topics, that is conservation of plants and animals, then biosphere, then biodiversity, then genus and species, then flora and fauna, then ecosystem, and then forest. So these are the topics which we will cover in the first part of the video. Right. So the very first topic, that is conservation of plants and animals. Now, if we talk about the conservation of plants and animals, there are different type of species which are found in India, not in only in India, but almost all over the world. So there are different type of species of plants and animals which are found, and even you can't believe that 10 to 15 million of species are found till today's date, and there are still so many types of species of plants and animals which are not being able to found yet, and living organisms also which are not being able to found yet till now. Though there are so many types of species which is surviving on earth, and whether it's in soil, whether it's in water, whether it's on land. So there are different type of species which are found in India and in different parts of the world also, you can say. So conservation of plants and animals, the very important thing, that is uh, the earth is full of life. No one knows exactly the number of varieties of living organisms existing on the earth. So on earth is a full of life, but no one knows, no one can exactly say about the living organisms living on earth till today's date. Now, earth, either due to natural calamity or because of mishandling of the wildlife by man, it is therefore necessary that we must adopt measures to conserve the existing plants and animals on this earth. Because nowadays people are hunting for animals for different for earning different type of profits and income, and people used to cut trees also on earth. So different type of measures, different type of work is done by the government, so that it can be stopped from cutting the trees and hunting for wild animals. Different type of measures have been are adopting by the government, so that it can be stopped. So this is the conservation of plants and animals. So this is how the Indian government and the different other organizations are also working for to stop cutting of trees and hunting of animals. So this whole process in which uh, the trees afforestation process is doing, or deforestation is stopping, or hunting of wild animals is stopping, so this whole process comes under the conservation of plants and animals. कंजर्वेशन मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? कंजर्वेशन मीन्स किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज़ को अच्छे से रखना. तो दिस इज डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस which are working for these things. So I hope this much is clear. Conservation of plants and animals. Now children, the next topic, that is the biosphere. Now if we'll talk about biosphere, biosphere word is divided into two parts. Bio means life, right? And sphere means what? You can say earth or atmosphere. So life which is living on earth, life which is existing on atmosphere of earth, so that is called the biosphere, right? Now see here, bio meaning life, and sphere stands for the earth and the atmosphere around it.
Biosphere is that protect part of the earth which supports life and is for the conservation of biodiversity. तो बायोस्फीयर क्या होता है? It protects and it conserves the biodiversity. And biosphere exactly means what? Biosphere means life which is existing on earth or on the atmosphere. Now hope I am clear. Now the next topic is what? Next topic is the biodiversity. Now okay, biodiversity. Next topic is biodiversity. Page number 98, children. So biodiversity, bio means again, bio word means what? Means life, right? And diversity meaning what? Variety. So different type of variety of life which is living on earth, that comes under the biodiversity. Variety of life which is existing on earth, that comes under the biodiversity, right? Bio means hota hai life and diversity means variety. Variety means different types, like plants is also there, animals is also there, single cell organism is also there, multicellular organisms are also there, and so many types of organisms are living on earth. So this comes under the biodiversity. Biodiversity means what? Different you can say variety of life which is living on earth, that comes under the biodiversity. Now I hope this much is clear. Now the next topic is genus and species. Now children, if we'll talk about this term genus and species, species is a group of individuals having structural and functional similarities. तो species means क्या होता है? Species means suppose if some of the category is having the similar structural and functional, both the things are having the similar, so that comes under a similar type of species, right? So now see here, on page number 98 in genus and species, there is a yellow chart is given in your book. See here, yellow chart is given in your book, and in yellow chart it is given about domestic cat, tiger, leopard, lion with their scientific names, right? तो scientific name में जो first part होता है like Felis is the generic name, and second part like domestic tigris, so this is the name of the species, right? तो जो first part होगा that will call the generic, and the second part is called the species name. I hope this much is clear to you all. Now see here in diagram in this chart, Felis word is given scientific name before domestic cat, tiger, leopard, lion. Why Felis is given? Felis is the type of species in which similar type of species are kept together. For example, यहाँ पे जैसे cat का example दिया है, lion का दिया है, tiger का दिया है, तो they all are having sharp teeth, they all are having claws, they are very fast, very active, so they are having the similar function as well as similar body structures. Whether it is depend ki little or big, but similar function and similar body structure, that's why it is kept in the similar type of categories, or you can say similar type of species. So and same similarly in plants may see the scientific name before the plant's name, the scientific name in scientific name ficus is kept, right? Ficus लगा हुआ, तो ficus means plants of the same category having the same type of you can say same type of features like flowers, they are having stem, having root, having these similar leaves they are having. So these are the plants which are of the same category, of the same species. So before their name ficus word is used. Hope I am clear till this much, genus and species. Now the next topic is the flora and fauna. Flora is the word which is used for the same type of plants which is found at the place, तो उसके लिए हम लोग फ्लोरा वर्ड का यूज करते हैं. एंड फौना इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, राइट?
Flora is the word which is used for plants, and fauna is the word which is used for animals, right? Flora is the type of plants which is living in a particular place, or you can say fauna is the type of, fauna is the type of animals which is living in a particular place, and they are having the similar features, you can say, or similar characteristics, having the similar characteristics. So this particular word is given, that is the flora and fauna, and I'm reading it here also. The specific plants growing naturally in a particular area from the flora of that area. तो पर्टिकुलर किसी एरिया में नेचुरल ग्रोइंग जो प्लांट्स होंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे, तो दे आर ऑल कॉल्ड द फ्लोरा. And similarly with the fauna, fauna is the word which is used for animals. Again, पर्टिकुलर एक एरिया होगा जहाँ पे एनिमल्स एक जैसे एनिमल्स रहते होंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, तो दैट द वर्ड इज यूज, दैट इज द fauna. Now hope I am clear. Now the next topic is the ecosystem. Now ecosystem includes all living and non-living objects in an area and their interaction with each other. Ecosystem means what? Ecosystem means जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर एक एरिया में रहते हैं, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. Why? Because they are interacting, whether it's living or non-living, but they are interacting with each other. That's why it is called the ecosystem, and it forms a ecosystem. For example, अगर हम लोग living organisms हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट करते हैं, लाइक सन, वाटर, sun, water. So these are what? These are non-living things, and like plants, animals, and we are the human beings. So हम लोग क्या हैं, हम लोग living organisms हैं. So we both are interacting with each other. So this comes under the ecosystem. Right? Ecosystem is the place where living as well as non-living, both the organisms interact with each other. So this is called the ecosystem. Hope this one is also clear to you all. Now next one is the forest. Now see children, next topic is the forest. Forest is the place which supports ecosystem, and forest, if we generally talk about the forest is the place which always supports ecosystem, right? तो यहाँ पे देखो next in forest sub heading is given, that is deforestation and its causes. Now the term that is deforestation. First of all, we'll know about the term deforestation. Deforestation means क्या होता है? Cutting of trees is called the deforestation, right? Planting of trees is called the afforestation, and cutting of trees is called deforestation. So deforestation and its causes. So deforestation means cutting of trees. And what are the causes of deforestation? So there are two causes of deforestation. First is the human activities. Human activities means like persons, they are cutting down the trees. Or second thing is what? Natural causes. So these are the two types of activities by which the deforestation is causing. Now this we will discuss. Now next topic is what? Human activities resulting in deforestation. Human activities क्या क्या होती है that causes the deforestation, that results in deforestation. That is, first one is what? Urbanization and increasing human population. Human population is increasing day by day. This is the most important reason for deforestation, right? Because जितनी ज़्यादा population बढ़ेगी, जितना ज़्यादा growth बढ़ेगा, उतना ज़्यादा लोगों की need बढ़ती है. Need बढ़ेगी तो क्या होगा? They will cut down the trees, और shelter चाहिए, food चाहिए, everything they want. तो ट्रीज को लोग क्या करते कट डाउन करते जाते हैं. तो दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. देन सेकेंड वन इज व्हाट? इंडस्ट्रीज. देयर आर सो मेनी बिग इंडस्ट्रीज विच आर कमिंग नाउ डेज. तो वो क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट का एरियाज लेके फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं. तो अगेन इससे भी क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं. Then third one is what? Wood as a fuel. Because we all need fuel in our vehicles. We need fuel for different for doing all our life activities, carrying out our life activities. तो हम लोग को फ्यूल चाहिए. तो अगेन हम लोग किस पे डिपेंड हो रहे हैं? वी आर डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट.
नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, वी नीड फर्नीचर। तो फर्नीचर के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए, वुड चाहिए ट्रीज से। तो फिर अगेन it impacts where, it impacts on the deforestation. So these are the human activities which is resulting in deforestation, which is causing in deforestation. Now the next one is the natural causes of deforestation. Natural causes क्या हो सकते हैं deforestation के? तो first one is what, forest fire. Sometimes कभी कभी क्या होता है forest में फायर कैच हो जाती है। तो बिकॉज जो फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, दे आर मोस्टली ड्राइड, राइट, ड्राइड होते हैं। तो वो क्या होते हैं, ईजिली दे कैच फायर फ्रॉम वन ट्रीज टू द अनदर। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स होल फॉरेस्ट इज कवर्ड विथ फायर। तो इसलिए दिस इज द कॉज, दिस इज द नेचुरल कॉज कि जिससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। देन सेकेंड वन इज व्हाट, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड सीवियर ड्रॉथ। Climatic changes means sometimes rain comes heavily, sometimes rain is mild. So again this causes the deforestation. Then next one is the storms and cyclones. Storms and cyclones means what, when strong winds blow off, so sometimes again they form the process of deforestation. जो ट्रीज होते हैं उसको क्या करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है तो बहुत से ट्रीज गिर जाते हैं या कट जाते हैं या गिर जाते हैं। तो अगेन दिस रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन। देन नेक्स्ट इज द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स आता है तभी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। अर्थक्वेक आएगा तो बहुत से ट्रीज होते हैं जो कट के गिर जाते हैं, अगेन दिस रिजल्ट्स इन द डिफॉरेस्टेशन। देन नेक्स्ट वन इज द लैंडस्लाइड्स अलोंग द हिली टेरियन कवर्ड विथ फॉरेस्ट। कभी कभी लैंडस्लाइड्स, जब लैंडस्लाइड्स होती है तो लैंडस्लाइड्स में क्या होता है, पूरे पूरे ट्रीज कट के गिर जाते हैं। जब लैंडस्लाइड होगी पूरा लैंड एक जगह से उठ के क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है, तो उससे भी ट्रीज क्या होते हैं, पूरे कट के गिर जाते हैं। तो अगेन दिस रिजल्ट्स इन द डिफॉरेस्टेशन। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, फ्लडिंग रिवर्स एंड deluges. Deluges carries away trees, crops and animals coming its way and erodes. अगर सपोज कभी फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो उसमें भी क्या होते हैं, बहुत से ट्रीज बह के फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे मूव। तो अगेन दिस रिजल्ट्स इन द डिफॉरेस्टेशन, राइट। वन मोर टर्म इज गिवन हियर, दैट इज डेलेक्ट। तो डिल्यूज मीन्स क्या होता है कि जब ट्रीज पूरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो जाते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द डिल्यूज, राइट। Then next one is the consequences of deforestation. What are the consequences of deforestation? The first consequence is global warming. अगर ट्रीज बहुत ज़्यादा कट हो जाएंगे या ट्रीज नहीं रहेंगे तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। So here loss of green trees and other green plants due to deforestation results in reduced consumption of carbon dioxide and photosynthetic activity. Because अगर ट्रीज खत्म हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कम होगा, फिर उससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, इट अफेक्ट्स द ग्लोबल वार्मिंग। देन डिस्टर्ब बैलेंस इन नेचर। डिस्टर्ब बैलेंस इन नेचर मीन्स अगर ट्रीज बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो चुके हैं या डिफॉरेस्टेशन हो चुका है तो उसका जो बैलेंस होता है नेचर का, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रॉपर टाइम पे रेन नहीं होगी, प्रॉपर टाइम पे फूड मटेरियल ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो अगेन दिस विल बी डिस्टर्ब्ड इन बैलेंस इन नेचर। देन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इरोजन। अगर बहुत ज़्यादा अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, तो दिस विल लेड टू द सॉइल इरोजन ऑल्सो। बिकॉज जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, जितने ट्रीज आपको सॉइल के ऊपर दिखते हैं उतनी जो रूट्स होती है ट्रीज की वो सॉइल के डेप्थ में होती है। तो अगर ट्रीज का कट सॉइल के अंदर जो रूट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे ट्रीज को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, सॉइल को भी होल्ड करके रखते हैं। तो इससे सॉइल क्या होता है, एक जगह फिक्स रहता है। तो जब रेन होता है, हैवी रेन होता है, तो वहाँ से सॉइल मूव नहीं होता, सॉइल इरोजन नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रीज। बट अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, ट्रीज कट जाएंगे, तो सॉइल क्या हो जाएगा, वहाँ से इरोड हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल, फेनोमेनन दैट क्लाउड्स आर अटैच्ड टू एरियाज व्हिच आर ह्यूमिड, फॉरेस्ट्री डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल। बिकॉज जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, they help in water cycle, they helps in forming of water cycle. अगर फॉरेस्ट के ट्रीज बहुत ज़्यादा कट जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा, तो वाटर साइकिल भी क्या होगी, डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, लोवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल एंड डिजर्टिफिकेशन। लोवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर मीन्स कि जो वाटर को जो ट्रीज होल्ड करके रखते हैं,
तो वो ग्राउंड वाटर क्या होगा और नीचे चलता चला जाएगा। अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो वाटर बहुत नीचे उसकी डेप्थ हो जाएगी, तो ईजिली वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड एक्सटिंक्शंस ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत से वाइल्ड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो सॉइल में रहते हैं, तो दे विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। The next one is what disturbance in environment affects both the rural and the urban life. अगर disturbance होगा environments में तो it affects both urban as well as the rural life. So these are the consequences of deforestation which can be happen if deforestation is not being restricted. Now next we'll discuss about the conservation of forest and wildlife in the next part of the video. Till then, thank you and have a nice day and keep on revising, children.